LCD, we move to the next one, and that is role of democracy in India. As we know, India is a democratic country where we find that the people are the most important one in this ruling system, where the people can participate in the ruling system, can exercise their fundamental rights and duties. They can enjoy their social, cultural, and religious perspective, and law is supreme in this country. There are the three chief organs of government, and that is legislature, executive, judiciary, and now in the present scenario, media is considered the fourth pole of the democracy. Since the beginning of the democracy in India, it has been a golden period in our country. The people elect their own government, casting their votes. And as far as the women and also the men are concerned, both of them participate without any partiality. It is the glory of democracy. And as Abraham Lincoln stated, democracy is the government of the people, for the people, and by the people. In this reference, we find a freedom in a country like democracy. Democracy generally allow the people to generally allow the people to convey their own and their own ways of life. And it is an opportunity for all of the people to communicate with the government without any fear or any hindrance. We find democracy the best one and a very liberal one in our country. But it is our responsibility that we must protect it. We must also understand our fundamental duties along with the rights. Gandhi always say, says, first you give me four, then demand the next five. These four are DUTY, that means Kartab, and the next five is RIGST, right? So we have some points to describe democracy. In democracy, the power is divided in
as a state level, as a central level, as well as the secretarial, and also in local governments. And the beauty of the government is that the people can directly connect to the ruling system through media, through mail, and different types of. They can express their opinion to the government, and the government must be responsible to the people in the country. As far as our country India is concerned, it is really a best example of democracy and the largest democracy as far as the world is concerned. सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है ये. So these are the points to describe about the role of democracy in India. Now, in the next series, we find also the warning and the current problem, and that is the next article, and that is the problem of unemployment in India. भारत में बेरोजगारी की समस्या. Unemployment is also one of the burning problems in India. As we know that we have been facing this problem for a long time, as there is less job opportunities in our country as in comparative to our population. Every year, maximum number of youth are standing in the row of unemployed men. Hence, it is a matter of deep concern for all of us, because if we are unemployed, we can't expect a life which is full of standard or full of satisfaction somehow to manage our family as well as other things. And there are the many reasons for it. The first is the most one is the overpopulation. Because of the overpopulation, the job opportunities are proving a dwarf in front of them. And the second is that there is the machinery is. In the past, when there were not the machineries, the people are getting an opportunity to work as a laborer. But because of the machines, the people remain jobless in the country. On the other hand, there is not an innovative infrastructure. Even today, we are growing in the age of information and technology. We are lagging behind as far as the new infrastructure and the industry development. And for this, the foreign companies must be invited to invest in our country so that we can look for the solution of this problem of unemployment. The government must find an opportunity to create a vacancy where there is a lack of there is lack of vacancies are there. We see that as far as the teacher department or many other departments, the posts are vacant, but the vacancies are not filled. That's why the number of the unemployed candidates are getting more and more day by day. It is a matter of deep concern that in our country, the talented and the young generation remain unemployed for a long time, and sometimes they also take a wrong step, and because of the blundering youth, they also forced to commit a crime. Nowadays, because of the unemployment, there is the increasing number of the cybercrime and other crime. Many of them also convert to wrong action. It is a threat to our young generation as well as the society and for our country. So hence, it is necessary for the government to take it seriously and find a kind of solution to minimize the number of the unemployment. Then we can predict
a safe future for our country. So these are the second, these are the two articles we have discussed here, and it is our responsibility to note down the points what I have discussed and to note down in your hobbies. And after that, if you have any difficulty, you can consult. And now, after this, we just move to the section C, the grammar section, where we find that there is direct and indirect. The exercise must be done to find as far as in your question banks, as far as your unsolved paper or somewhere is. And if you have any problem, you can consult. Now we have few sentences for you to change into indirect speech. The sentence is he said to his brother. Inverted comma start. May I join your company? Question mark inverted comma close. तो फॉर एन एग्जाम्पल सेट को हम कन्वर्ट करेंगे आस्केड में. रिक्वेस्टिंग फेज है, फिर भी हम आस्केड में ले जा सकते हैं. तो ही आस्केड इज फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर वाक्य से आरंभ है, इसीलिए हम इफ का प्रयोग करेंगे कामा को हटाने के लिए. तो ही आस्केड इज फ्रेंड इफ ही, मे को हम ले जाएंगे माइट में, योर को ले जाएंगे हिज में. तो पूरा क्या बना? ही आस्केड हिज फ्रेंड इफ ही माइट ज्वाइन हिज कंपनी. उसके बाद में फुल स्टॉप. ओ आर करके सेंटेंस आया जैसे दे सेड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट. एलास, उसके बाद में विस्मयादिबोधक निशान. वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा. तो क्या होगा? चूंकि एलास दुख का प्रतीक है, इसीलिए सेड या सेड टू किस में जाएगा? एक्सक्लेम विद सॉरो में. तो दे एक्सक्लेम्ड विद sorrow that they had lost everything. इसके बाद में फुल स्टॉप कर देंगे. इसी प्रकार से आता है आपका कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स. कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है, फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए, और जो सेंटेंस है उनको आपको जोड़ना होता है. एज डायरेक्टेड का मतलब जैसा कि निर्देश दिया गया है. ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक के अनुसार. तो जैसे आपके पास सेंटेंस आ गया, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, फुल स्टॉप. उसके बाद दूसरा आपका वाक्य है ही वेंट होम, फुल स्टॉप. फिर उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा, तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा सिंपल सेंटेंस. तो जब दो वाक्य हो और एक में कार्य का संपन्न होना दिखाया जाए और उसके बाद उसी क्रम में दूसरे कार्य में आगे कार्य का होना बाद में दिखाया जाए, तो पहले वाले वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग का प्रयोग करते हैं. उसके बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था आती है, और दोनों में अगर सेम सब्जेक्ट है, यानी एक ही प्रकार का सब्जेक्ट है, तो वहां से हम पहला जो सब्जेक्ट है उसको हटा करके दूसरा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो इस प्रकार से हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम, उसके बाद में फुल स्टॉप हो जाएगा. अब इसमें ओ आर करके लिखा है, दो में एक करके होता है, फिर ओ आर करके लिखा है. जैसे सेंटेंस है where do live, क्वेश्चन मार्क, पहला सेंटेंस.
और दूसरा सेंटेंस है आपका आई वांट टू नो, के या नो डब्ल्यू, नो। उसके बाद में फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये तय करना है कि दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है प्रमुख है। तो पहला पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, दूसरा पूछा गया मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट किसमें ज्यादा प्रभावशाली है और कहाँ से इसका मूल बिंदु है। तो इसका मूल बिंदु यही है कि मैं जानना चाहता हूँ। ठीक, कभी भी जब प्रश्नवाचक वाक्य हो इस प्रकार के वाक्य में, तो जब प्रश्नवाचक वाक्य दूसरे क्षण में आता है बाद में लिखा जाता है तो उसको हम अफर्मेटिव में लिखते हैं। तो इसलिए इस वाक्य को जब बनाया जाएगा और अगर WH या SW टाइप के वाई है, वैन है, वेर है, हु है, ये आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम क्या करते हैं कि इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, अलग से दैट नहीं लगाते हैं। तो जैसे आपका वाक्य था वेयर डू यू लिव, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क था, फिर उसके बाद में ये था आई वांट टू नो। तो हम दूसरे वाक्य को पहले लेंगे आई वांट टू नो वेयर यू लिव, उसके बाद में फुल स्टॉप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब ये तो हो गया आपका सिंपल यानी कंबाइन करने के लिए, वो सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, दो आगे। अब उसके बाद में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वाक्य की संरचना भले ही बदल दी जाए लेकिन उसका जो भावार्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। तो इसलिए ऐसे क्रम में आपका जो है लिखा होगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। नीचे दिए गए वाक्य के रूप को बदलिए जैसा कि कोष्ठक में निर्देशित है। तो उसे मान लीजिए आपका आ गया डिग्री में बनाने के लिए, जैसे सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, और ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में लिख दिया गया CD यानी कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में ये देखना होता है किसकी तुलना किससे की गई। तो इसमें जो C है उसकी तुलना जितने भी विद्यार्थी उनसे की गई, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में हम जानते हैं कि बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब चूंकि C से बढ़कर के कोई है नहीं तो इसीलिए देन ए नहीं आना लगेगा। तो बनेगा आपका सेंटेंस, जैसे सेंटेंस क्या था आपका, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो सी बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, सी बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब ऐसे करके अथवा करके आता, अब अथवा में सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पैसे भी पूछ लेता। तो जैसे पैसे में आ गया आई called him fool, I called him fool, फुल स्टॉप। उसके बाद में ब्रैकेट में लिखा रहेगा पैसिव वॉइस। तो हमें ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया आई, कार्ड हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट और फूल हो गया कॉम्प्लीमेंट। फूल से पैसिव नहीं बनाना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हिम का जो ऑब्जेक्ट हिम है अब इसका सब्जेक्ट आना पड़ेगा, तो हिम का हो जाएगा ही। फिर हमें ये चेक करना है कि हम किस टेंस में थे। तो हम पांच इंडिफरेंट टेंस में थे। हमें क्या करना होगा कि अब एक टेंस जो है आगे जाना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वाज को लाएंगे। तो ही वाज कॉल्ड, ठीक है, ही वाज कॉल्ड फूल बाय मी। सेंटेंस क्या था, आई कॉल्ड हिम फूल, तो क्या हो जाएगा, ही वाज कॉल्ड फूल बाय मी। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या आता है, करेक्ट द